dear friends, students, we are doing chapter number 7, Psychology, class 12. So as per NCERT book, we are at 130 page, 130. Okay, so I would suggest you open NCERT book and keep along with you so that you can get to know that where are we and what are we studying. And just for your information, this content in this video is taken from NCERT book only, so you can wholly rely on this PPT. Alright, so अपने बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे completely अपने नोट्स की तरह लर्न कर सकते हैं. Let's begin. This chapter is related to social influence and group processes. So when it comes to these topics, we are going to study this in details. But the very first thing which we should know is the introduction. In our basically day-to-day life, what do? We interact with many people. That could be within our family. We have friends around, teachers to whom we meet every day in the school, and our classmates. So can we call all these people a group, a single group? This chapter is related to that. So we'll study what kind of groups here we are talking about. These groups actually provide us. Now when we are in a family, we are with friends, why do we feel so good about it when we are surrounded with our family, friends, teachers? Because we get comfort. So you are supposed to underline this word, it's comfort. Because we get comfort and it facilitates growth and development. How? Because we get motivation from our teachers, we get warmth within our family, friends gives us the right feeling when we are surrounded with friends. So we feel comfortable, we feel sense of security. So that is how groups are important in our life. See the family here, we are with our parents, with our grandparents. This is our play group. हो सकता है कि हम evening में playground में जाकर, not necessarily with our schoolmates we are playing, it could be different group. So it's called play group. You are in the class with your classmates, with your teachers, another group. So now here comes the meaning. What do we understand from a group? What is a group? So you can make this question and write it down in your notebook. Now this answer is taken from your NCERT. You can refer on 130 page. It is given there. A group may be defined as an organized system. So you have to remember, it's not an unorganized system. Haphazardly you met somebody and you thought I am a part of a group. You were traveling from one place to the other, and you are in a bus and many people are sitting together. So can we call them a group? I don't think so. So it's an organized system where two or more individuals who are interacting. So what is important here? Keywords are: one, organized system; two, they are interacting and interdependent. So when I say interacting, means you're meeting them maybe every day, or maybe alternative day, or maybe weekly, monthly. You don't meet your friends every day, or maybe in a relative way, the relatives, you don't meet your relatives every day, but they are part of a group. So it's an organized. So it is organized system, interacting and interdependent. We all are interdependent. एक दूसरे के साथ ही हम grow करते हैं. We can't call ourselves independent. We are interdependent. Then there should be a common motive. फैमिली में कॉमन मोटिव क्या है? एक लव, अफेक्शन बनाए रखना. क्लासरूम में कॉमन मोटिव क्या है? गुड रिजल्ट्स लाना, एक क्लासरूम के एथिक्स को मेंटेन करना. सो एवरी ग्रुप विल हैव अ मोटिव, राइट? Although that motive is not written on the board or on a pin board or maybe on a wall, it's understood that this family or friends, we have a common motive or a goal. Have a set of role. Everybody knows about their role very well, although they are not pre-written anywhere. Relationship amongst its member and have norms. They are not, we call it unwritten rules are called norms. Norms means मुझे अपने norms पता है as a mother. I know my norms as a teacher. Similarly, my children know when they are at home what do they have to fulfill, what kind of tasks they are supposed to do, how they are supposed to behave. So there are certain norms.
किससे रिलेटेड है? इट रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स. So you're supposed to underline certain words. Organized system, number 1. Interacting, interdependent, number 2. Common motives, number 3. Then they have norms and roles, relationships, and they regulate the behavior. Alright, let's move further. What are the characteristics of a group? We call it salient characteristics or features, you can call it. This question can come in any way. So the very first thing which is given here is its social unit. Okay, socially we are connecting and consisting of course, when we say group means single person cannot be a group. It has to have 2 or more people. Okay, who perceive themselves as belonging to the group. जिन्हें लगता है कि वो इस ग्रुप को belong करते हैं. जैसे हम किस फैमिली को belong करते हैं, it's just a sense, तो हमें लगता है. Alright, then they have common motives and goals. Okay, so हम सब में कुछ न कुछ कॉमन है, कोई गोल है जो हमने सेट कर रखा है. इंडिविजुअल्स क्या है? दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. देखिए, यू कैन रेफर द पिक्चर, दे आर हेल्पिंग ईच अदर, राइट. सेटिस्फाइड अ नीड थ्रू देयर जॉइंट एसोसिएशन. अगर घर में एक भी फैमिली मेम्बर जो है वो लो फील करे, व्हाट डू द अदर्स डू? दे ट्राई टू बूस्ट द मोरल ऑफ दैट पर्सन. मोटिवेट करते हैं. They talk to the person, what happened, what they wanted to know the reason. So ये क्या है? ये joint association है. हम एक दूसरे को influence करते हैं. कैसे? Positive influence करते हैं. Alright? Then individuals क्या करते हैं एक दूसरे के साथ? They interact. So बहुत common points बार बार आ रहे हैं. Motive है, joint association, interact, interdependent, right? The interaction of individuals are structured. You remember? Organized है ये. It's an organized structure, so it is a structured interaction is in this structured manner by a set of roles and norms. There are certain roles which are defined. जैसे father knows about his role. Supposingly if he is the bread earner, he knows about it, that you don't have to remind him that dad you go and earn money. He knows very well. And when it comes to if mother is bread earner, so father knows he has to handle the house. So everybody knows their role very clearly. Students or children, they know very well they have to help mother in the kitchen, and they can extend their help to the father also sometimes if in case it's appropriate. So children also know their role. उनका रोल पढ़ना भी है तो उन्हें रोल रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है. So this is how there are certain norms and there are certain roles, right? Then comes crowd. How crowd is different from group. क्या हम ऐसे मिले हुए लोगों को जो ऐसे ही कहीं मिल जाए, जैसे क्राउड तो बाजार में भी है, फेयर में भी है, तो क्या हम इन्हें भी ग्रुप कह सकते हैं? थिंक अबाउट इट. आई डोंट थिंक सो. It means mere collection of people at one place cannot be called crowd. क्योंकि ना उनमें इंटरडिपेंडेंस है, ना उनके रोल्स क्लियर हैं, नीदर दे आर. कैन यू सी द क्राउड? आर दे इंटरैक्टिंग विद ईच अदर? नो, दे जस्ट बाय चांस दे आर एट वन प्लेस. बाय चांस, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अ ग्रुप. देयर इज नीदर एनी स्ट्रक्चर नॉर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, सो यू कांट कॉल देम अ ग्रुप. ऑलराइट. Then behavior of people in a crowd is irrational. Can you see? Everybody is independently, they are just walking. They have no interaction with others, no eye contact in fact. So there is no interdependence. So on this basis we say mere collection of people cannot be called a group. Then comes a team. तो जो ये टीम है, क्या इसे हम कह सकते हैं? टीम क्या है? हमने इसे डिवाइड किया. T stands for together, everyone achieves more. यानी एक पर्पस के लिए इकट्ठे किए गए लोग जब वो इकट्ठा काम करते हैं मिलकर, तो वो बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स ला सकते हैं. पर इन्हें हम स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप्स कहते हैं क्योंकि ये स्पेशल पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज. जैसे टीम बोलो हमारे माइंड में आ जाता है स्पोर्ट्स टीम्स, मेनली क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, राइट, इंडियन हॉकी टीम, बैडमिंटन प्लेयर्स. इस तरह से हमारे आइज़ के सामने टीम आनी शुरू हो जाती है. सो दे आर स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप्स. लेकिन इनमें एक बात बहुत ध्यान से समझनी है, दे हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स. ये जो सारी बातें हैं ये सब आपके 131 पेज पर दी हुई हैं एनसीईआरटी में.
कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स की जब बात आती है, कैसे इंडियन क्रिकेट टीम वी कैन एसोसिएट विद वेरी वेल बिकॉज वी आर cricket lovers, right? So what do we see? If one player is very good batsman, so the other person may be a spinner, third will be a fast bowler. This is how we know them, right? So that means they complement each other. वो एक दूसरे का सब्सटीट्यूट नहीं है, वो एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हुए ही they perform extraordinarily. Okay? Now, committed to a common goal. What is the common goal of a cricket team? They have to win. They have to win against whatever team is playing with them. So they have a common purpose. They are committed to that. Members are mutually accountable for their activities. अब अगर एक भी कैच छूट जाता है तो that person is answerable to the bowler or to the whole team कि भाई क्या मिस्टेक की, क्यों हुआ ऐसे, तो वो अपने एक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके इस फोटोग्राफ के थ्रू मैं बताना चाह रही हूँ, अगर एक फाइनेंस टीम ही अच्छे से काम ना करे, वो प्रॉपर फाइनेंसेस को टाइमली रिलीज ना करे, तो क्या होगा, फाइनेंस रिलीज नहीं हुआ तो मार्केटिंग नहीं हो पाएगी, सेल्स नहीं होगी, प्रोडक्शन कैसे होगी. देखो एक पर्सन के अच्छे से काम ना करने की वजह से बाकी सारी टीम का नुकसान हो सकता है. सो दे आर अकाउंटेबल, दे हैव पॉजिटिव सिनर्जी, मतलब ये सब एक दूसरे को बूस्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि इन सबको आपस में एक दूसरे के साथ, तो कभी क्रिकेट टीम को देखो ऑन द ग्राउंड तो एक दूसरे को बूस्ट करते हैं, एक दूसरे को आवाज़ मारेगा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, राइट. तो ठीक है, इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं इवन ऑन द ग्राउंड. सो दे कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स एंड देन दे ब्रिंग द पॉजिटिव रिजल्ट. What makes a team effective? ये नोट्स में नहीं है, आपके NCERT में नहीं है, बट इट जस्ट आई इंक्लूडेड दिस so that you should know a little bit about this. क्या होना चाहिए अच्छी टीम में? ट्रस्ट होना चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए. देखिए पिक्चर में देख सकते हैं आप, जो दो लोग तीन के ऊपर हैं उन्हें ट्रस्ट है कि वो नीचे वाले उन्हें गिराएंगे नहीं. एंड द वन हु इज ऑन द टॉप, ही नोज अबाउट इट दैट द रेस्ट दीज पीपल हु आर अंडर हु आर होल्डिंग हिम is not going to make him fail. So there's a trust, there's an energy, goals are clear, where do they have to reach, they appreciate each other, they are accountable to each other, unity of purpose होना चाहिए. इस तरह से ये सारे कुछ points हैं. they are attentive towards result. there is a freedom of expression, they express their thoughts. effective communication is very very important. अगर सबसे टॉप वाला सबसे नीचे वाले से बात नहीं कर पाएगा तो शायद इतनी सक्सेस से नहीं खड़ा रह सकता. सॉरी. नेक्स्ट टर्म जो है ऑडियंस, दैट इज गिवन ऑन 132 पेज इन NCERT बुक. ओके ऑडियंस. ना ऑडियंस भी देखिए तो ग्रुप ऑफ पीपल ही हैं, कलेक्टेड पीपल एट वन प्लेस. बट एक चीज जो आप इनके बारे में नोटिस कर सकते हैं वो ये है कि ये पैसिव लिसनर्स हैं. They are not participating, they are just listening. So they are on the passive side, not active members. Okay. Audience क्या है? According to your book, collection of people assembled for a special purpose, maybe to watch a show or a talk show, or maybe कोई concert है उसके लिए इकट्ठे हुए हैं, right? Generally they are passive, they are not active, and this is what is all about crowd. हमने ये 4 टर्म्स पढ़े हैं अभी, ग्रुप, टीम, क्राउड एंड ऑडियंस. सो ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, सो दैट बाय चांस इफ यू गेट अ क्वेश्चन इन द पेपर, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रुप एंड टीम, सो यू हैव ऑल द पॉइंट्स रेडी इन फ्रंट ऑफ यू. If you get a question, compare team with crowd, so you have certain points, crowd with audience, audience with group, so you have the comparison chart in front of you. So you better make this in your notebook. This is not in the book, but I have made it for you so that to make your learning easy. Alright, and remember, they should not be like this. जब भी आप difference लिखें, hints नहीं लिखें, write down in a sentence. Okay, let's move further. Mobs एक term use हुआ है यहाँ पर इसी paragraph में, mobbing. Okay, 132 में audience में ही last line है paragraph में, mob behavior क्या है. इसका literal meaning है a large crowd of people, especially one that is disorderly and intent on causing trouble. मतलब उनमें disordering हो गया है, मतलब वो आपस में
कन्फ्लिक्ट हो गया है और वो क्या कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, तब हम इसे मॉबिंग टर्म कह देते हैं या मॉब्स कह देते हैं उन्हें। When audience go into frenzy, wild behavior जिसे कहते हैं, they become mobs। कभी कभी देखा होगा whenever you can see that क्रिकेट में ही हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि ऑडियंस है, दे आर पैसिव ऑडियंस, फिर क्या हो गया, सडनली अगर बाय चांस the team is not able to score well, so what do, they start throwing bottles or maybe trash on the players. That is what is called mobbing, right? Now they're behaving violently, so that's called mobbing. Definite sense of purpose होता है, क्या, violence करना, पता है उन्हें। फिर polarization हो गया, क्या हो जाएगा, एक ग्रुप रोकेगा, दूसरा अटैक कर रहा है, तो दोनों में क्या हो गया, दो ग्रुप्स बन गए और डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियंस हैं, बिलीव्स हैं, एंड दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। सो जिसे हम राइट्स कह देते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, दो ग्रुप्स आ गए आमने सामने एंड दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। ओके, सो पोलराइजेशन मीन्स डिविजन इनटू टू शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग ग्रुप्स और दे हैव डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियंस। Actions of people are in a common direction. What is the action? Disturbing the other or maybe winning unnecessarily with no purpose. Winning हो जाती है। There is homogeneity of thoughts. Homogeneity कैसे, एक ग्रुप सोचता है ये ठीक नहीं हुआ, दूसरा ग्रुप सोचता है नहीं हम ठीक हैं, तो उनमें ग्रुप कैसे मिले, जिनमें सिमिलर थॉट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। Then they behave impulsively. What do they do? Behavior, homogeneity of thought and behavior as well as impulsivity. Now what is that? Impulsivity is it is done suddenly without planning. ऐसे नहीं होता घर से सोच के गए थे कि आज प्लेयर्स के ऊपर बॉटल्स मारेंगे, नो, बट वहाँ पर इतना सिचुएशन ऐसी हो गई, पीपल बिकम इम्पल्सिव एंड दे स्टार्टेड डूइंग इट। सो इट्स अनप्लैंड एक्शन बट it suddenly becomes violent. Okay, so this is given on your 132 page NCERT. Rest we will record in the next video. Keep watching. Bye bye. Take care.